Switch on your cameras, everyone. लास्ट क्लास में शुरू हो गया था। क्या किया था? अच्छा। ओके। वो वाला वर्क ही नहीं कर रहा, ऑन ही नहीं हो रहा है। Binomial. So a plus b to the power n is nc naught a to the power n, nc1 a to the power n minus 1 b to the power 1, nc2 a to the power n minus 2 b to the power 2, ncr a to the power n minus r b to the power r. This is general term. और इसको यूज करके लास्ट क्लास में हमने एक एक्सपेंशन भी किया था, एंड दैट वाज, अच्छा एक और चीज, इफ दिस इज माइनस साइन देन ऑल्टरनेटली द टर्म्स वुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. We found root 2 plus 1 to the power 6 plus root 2 minus 1 to the power 6, and it was how much? 198. ये था. नाउ किसी भी नंबर को हम इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 95.6 is 95 plus 0.6. So 95 is basically the integral part, integer जो है ना, this is the integral part, and this is the fractional part. Fractional part हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है. It is always less than 1 and more than 0. Equal to 0 भी हो सकता है. So fractional part and integral part, किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं. जैसे 198 में इंटीग्रल पार्ट 198 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया. Now, you know this result already. My question for you is, tell me what is the integral part and the fractional part of root 2 plus 1 to the power 6. इसमें इंटीजर कितना है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? What is the integral part and fractional part in root 2 plus 1 to the power 6? रूट 2 प्लस 1 की पावर 6, ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी मालूम है. जो रिजल्ट गिवन है उसको लिख लो, वो वाला. ये तुम्हें मालूम है ऑलरेडी, इसको यूज करके भी कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास टाइम है खोल के करने का तो वैसे कर लो. ये हमें पता है. दिस इज नोन टू अस. थिंक एंड आंसर. रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 6 को अगर एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रल पार्ट कितना होगा और फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा?
ऑप्शन दो। एसी ऑप्शन चेंज कर रहा हूं मैं। इससे हिंट लो। √2 - 1 की वैल्यू तुम पूरा सॉल्व करोगी? पूरा सॉल्व करना नहीं है। √2 - 1 की वैल्यू क्या होती है? 0.41। इफ आई स्क्वायर इट और आई रेज इट टू द पावर 6, तो क्या आंसर आएगा? एनी नंबर बिटवीन 0 and 1, इफ यू रेज टू एनी पॉजिटिव पावर, उसकी हमेशा आंसर 0 1 के बीच में रहता है। इट विल बी ऑलवेज बिटवीन 1 and 0। A number between 0 and 1, if it's raised to any positive index, it will remain the same only. Positive index more than 1. 0.1 की पावर 2 कितना हो गया? 0.01। 0.2, 0.1 की पावर 3, 0.001, और छोटा हो जाता है। Any number between 0 and 1, if you raise to any positive index more than 1, वो हमेशा 0 1 के बीच में ही होगा। That means this number is between 0 and 1। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ना। That is, √2 plus 1 की power 6 will be 198 minus √2 plus -1 to the power 6. That is 198 minus some fractional part. 198 minus some fractional part कितना होगा? 197 point something. तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हुआ? थैंक यू वेरी मच। डी इज आंसर। एंड यू थॉट कि उसको आधा कर दो, 99 आंसर है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 197 होगा, बिकॉज √2 - 1 की पावर 100 भी कर देंगे तब भी वो 0 1 के बीच में ही होगा। एनी नंबर लेस देन 1 मोर देन 0 रेज टू एनी पावर मोर देन 1 विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। ठीक है। Now what if a is 1 and b is x? फिर क्या होगा? This binomial would be 1 plus x to the power n, which would be nc naught 1 to the power n. There's no need to write nc1 x to the power 1, because bx है ना, nc2 गेट बंद कर दो प्लीज। किसी का माइक ऑन है? गरिमा? सॉरी सर। कोई बात नहीं। ncr x to the power r, ncn x to the power n. So this is the general term. This is tr plus 1 term or general term. तो we have seen that किसी भी binomial expansion में if we have a plus b to the power n, number of terms हमेशा कितनी आएंगी? Number of terms would be always n plus 1। एक एक्स्ट्रा होता है।
बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म. इफ आई हैव a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n, इट वुड बी ट्राइनोमियल. वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. इफ यू हैव a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार टर्म्स टू द पावर n, दैल बी मल्टीनोमियल. दैट इज ऑल्सो नॉट इन आवर कोर्स. इनकी अगर इंडेक्स नेगेटिव या फ्रैक्शन है, वो भी अब सिलेबस में नहीं रहा है. So if you have suppose 2x square minus 3 by 4x to the power 10, कितनी टर्म्स आएंगे इसमें? 10 plus 1, 11 टर्म्स आएंगी. So if n is even, then total टर्म्स कितनी हो जाएंगी? Odd, एक एक्स्ट्रा हो गया ना. So how many middle terms would be there? Middle term, only one middle term. एक ही मिडिल टर्म आएगी. जैसे कि इसमें 10 पावर है, टोटल टर्म 11 हो गई. सिक्स टर्म वुड बी द मिडिल टर्म. So middle term would be only one, and that middle term would be basically n by 2 plus 1th. लिख लो ये. जब भी n even होगा, एक ही मिडिल टर्म होगी, and that would be n plus 1 and n by 2 plus 1th. So when n is even, there'll be only one middle term, and that middle term would be n by 2 plus 1th. एक काम करो, इसी क्वेश्चन में मिडिल टर्म निकालो. फाइंड द मिडिल टर्म. 2x square minus 3 by 4x to the power 10 में फाइंड द मिडिल टर्म. कैसे यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना. पहले ये देखो कौन सी टर्म मिडिल टर्म है. n by 2 plus 1th is the middle term. So first you find which is the middle term. Yes, no, r plus 1. General term is r plus 1. So n over here is 10. The middle term would be n by 2 plus 1th. So that is sixth term is the middle term. So we need to find T6. T6 will be written as T5 plus 1. This is the formula you can use. So n is 10, r is 5, a is 2x square to the power 10 minus 5, b is minus 3 by 4x to the power r. And then you can simplify this. Because t r plus 1, when you have t r plus 1 term, then you have r over there. इसको भी डायरेक्ट कर लिया. नहीं नहीं, गलत हो गया ना.
You're finding T6 will be T5 plus 1. तो R तुम्हारा 5 होगा. वो देखो. T6 will write as T5 plus 1. R would be 5. और बिना फैक्टोरियल के यूज करो. 10 को 5 प्लेसेस ओपन करो till 5 and then 5 factorial. So 10C5 would be 10, open 10 5 places by 5 factorial. So 5, 4, 3, 2, 1. And then you can simplify. This would be 2 raised to power 5, x to the power 10. This would be minus 3 raised to power 5, and 4 raised to power 5 is 2 raised to power 10, x to the power 5. सॉल्व किया किसी ने? जायना? सर वो 10 को सॉल्व करके 252 अच्छा ये वाला. 3 to the 6, 4 to the 8. कितना बता रही हो तुम ये? 252 18 into 14 आ रहा है ना? 18 into 14 ना? ठीक है. 252. This is 2 raised to power 10. This is 2 raised to power 5 will be 2 raised to power 5. X to the power 5, x to the power 10, x to the power 5. So the final term will come out to be, will be negative 252 divided by 2 raised to power 5, 3 raised to power 5, x to the power 5, right? 252 is 2 raised to power 8. 2 raised to power 10 is 1024, है ना? 2 raised to power 10 is 1024. 2 raised to power 9 is 51. 2 raised to power 8. तो 256 नहीं. Okay, sorry. फायदा नहीं हुआ फिर. So leave it. That's 256. So 4 से तो फिर भी कट जाएगा ना ये. So minus 252, 4 into 8. 3 raised to power 5, x to power 5. So 63 by 8 into 3 raised to power, into 3 raised to power 5, x to power 5. So that is the middle term. So when n is even, there will be only one middle term. It will be n by 2 plus 1th. Now suppose we have a situation when n is odd. Suppose we have 2x minus 3 by 2x cubed to the power 13. How many total terms would be there? 14. 40 So there will be two middle terms. There will be two middle terms. Whenever n is odd, there will be two middle terms, and these will be n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2th. There will be two middle terms. जैसे 13 है ना, so it will be 13 plus 1 by 2 6th, 13 plus 3 by 2, that is 7th. 13 plus 1, 7th and 8th. So this time we'll have two middle terms. Karo find. Find two middle terms in the expansion of
2x minus 3 by 2x cubed to the power 13. T7 and T8. T7 would be T6 plus 1. R would be 6. Hmm? So it will be positive term. 13 C6 means open 13 6 places by 6 factorial. 2 raised to power 7, x raised to power 7, 3 raised to power 6, 2 raised to power 6, x raised to power 18. ये कट जाएगा. क्या आ रहा है? 210 आ रहा है उसका. 13 C6. नहीं वेट सॉरी सॉरी गलत हो गया. फाइनल आ रहा है 8008 इंटू 3 to the power 7 8008. इंटू 3 to the power 7. x खा गया, भूख लग रही है. एक्स की पावर -1. नाराज मत हो, बता रहा है वो धीरे धीरे. तो basically multiply 13 into 2, 26 into 110.
थ्री को उसने यहाँ पे ले लिया, 3 raised to power 7 कर दिया। तो 8008 कैसे आ रहा है? अच्छा ये था, 5 से इसको कैंसिल किया। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। और किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा है? मेरा 3432 into 3 to the power 6 आ रहा है। 3 4 32। 3 4 मेरा भी सर 3 2 3432 into 3 raised to power 6। हाँ जी हाँ सर मेरे मेजोरिटी भी का यही सेम आ आ रहा है। ठीक है। हम्म, ठीक। हमेशा एमसीक्यू में ऑप्शन देखना पहले, देन स्टार्ट कि ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है। अगर बाई चांस ऑप्शन पार के फॉर्म में दे रहा है, देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट। ठीक है। एंड द नेक्स्ट टाइम तुम निकाल लोगे वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, राइट। क्वेश्चन। Second, third, and fourth term in the binomial expansion, a plus b to the power n is this: 240, 720, and 1080. Find a, b, and n. Three equations, three unknowns. Solve करो। वैसे करो। There'll be three terms, three equations. Second term क्या होगा? बड़ी बाबा, nc1 a to the power n minus 1 b to the power 1 is equal to 240. Third term would be t2 plus 1, that is nc2 a to the power n minus 2 b to the power 2 720. And the fourth term would be 3 plus 1 nc3 a to the power n minus 3 b to the power 3 1080. Three equations. Divide equation 2 by 1 and equation 3 by 2. 2 को 1 से डिवाइड करो एंड 3 को 2 से डिवाइड करो एंड यू गेट योर आंसर।
2 by 1. NC2 is n into n minus 1 by 2 factorial. A to the power n minus 2, b to the power 2 whole divided by NC1 is n. 720 by 240 is 3. N. So you get value of b by a from here. b by a कितना हो गया? b by a is 3, 6 divided by n minus 1. Similarly, you get b by a from the third equation divided by second equation. Equate the two, n आ जाएगा. इसको डायरेक्टली याद करो. NC2 n को 2 बार ओपन किया, NC1 एक बार ओपन किया, NC3 3 बार ओपन किया. इक्वल टू था वो राइट साइड में हो. यहाँ ए बचेगा, नीचे नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा. नाउ सेकंड, we're dividing third by second. NC3 is open in 3 places by 3 factorial, which is 6. A to the power n minus 3, b to the power 3. NC2 is open in 2 places by 2 factorial. A to the power n minus 2, b to the power 2. 1080 by 720. 108 by 720 कितना आ रहा है? 12 की टेबल से कट रहा है ना? 3/2. B in the numerator, A in the denominator. 3 factorial 6 will be 3. So B by A would be 9 divided by 2 into n minus 2. Just check this out. ये आ रहा है? Yes, Avika, your answer is right. Now you find A and B. Yes. Yeah, perfect. ठीक है अविका. ठीक है. बहुत सिंसियर है वो. तुम 10 क्लास में एक बार आती हो. पता लग गया ना कैसे हुआ है. NC4 वाले तो क्या करते हैं? n n-1 n-2 n-4 by 4 factorial. So equate these two and solve. N is coming out to be 5. N5 आ जाएगा. N5 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो B by A would be 3 by 2. That is B is equal to 3A by 2. And this B is equal to 3A by 2. We substitute in the first equation. N is 5, 5C1, A to the power 4, B to the power 1, B is 3A by 2, equal to 240. 5C1 is 5,
This is 16. A to the power 5 is 32. So that gives you A is equal to 2. B is equal to 3. Yes. क्यों? अगर B by B6 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, तो क्यों थोड़ी कर सकते हो? B3/2 हो सकता है, A1 भी हो सकता है, B3/2 A1, B6 A4, कुछ भी हो सकता था. So first we equated B by A, we got N, then we substituted B is equal to 3A/2, we got A and then B. किसको माइनस करना है? माइनस थोड़ी करना था. अच्छा, डन. अनुज, रिन, प्रिशा, Yes. Yes, sir. Janvi, have you done? Next question. The coefficient of three consecutive terms, write it. I'll write on the board. Of three consecutive terms in the expansion of x plus a to the power n are in the ratio 1:7:42. Find n and r. Now, three consecutive terms, which don't know which three terms. So you have to take in general, maybe tr plus 1, tr plus 2, like that. And remember that it says the coefficient. You don't have to take the entire term, only the coefficient. Only the coefficient are in the ratio. Coefficient means binomial coefficient, C. So which three terms will take as consecutive? You might take trth, tr plus 1, and tr plus 2. Tr would be tr minus 1 plus 1. The standard way of writing is something plus 1. So it will be tr plus 1 plus 1. You can't take 1, 2, 3, 3, 4, 5. You can't do that. So this will be ncr minus 1, x to the power n, r minus 1, a to the power r minus 1. This would be ncr x to the power n minus r,
a to the power r. This would be NCR plus 1, x to the power n minus r plus 1, a to the power r plus 1. But we are interested only in the coefficients. This is what we want. These are the binomial coefficients. They are in the ratio 1:742. So we have NCR minus 1 is to NCR is to NCR plus 1 is equal to 1 is to 7 is to 42. So what do you do? You take this ratio first, then you take this ratio, two equations, two unknowns, you get your answer. कर लो. जब पूरा फैक्टोरियल लेके सॉल्व करना पड़ेगा. आराम से बिना गलती किस प्लस माइनस गलती मत करना. ठीक है. 1:7 and then this by this 1/7 हो गया. This by this would be 7/42. हाँ राइट. बड़े फैक्टोरियल से छोटे फैक्टोरियल कट जाएगा. इससे r प्लस 1 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल बाय r फैक्टोरियल. r बच जाएगा, r प्लस 1 बचेगा. क्या था ना उसमें कॉम्बिनेशन में, वो करना है तुम्हें. इक्वल टू 1/7 लिखो. अच्छा उल्टा कर रही हो. 7/1. ठीक है. ये इतना सारा डिवीजन कैसे आ गया? तो अरे तो पहले दो का लो ना. गरिमा कर लिया. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. कर रही हूँ. चलो तुम बैठी दो क्लास में. अस्मी बोलिए वो घूमने गई हुई है. मैं घर पे हूँ. बोले मैं 1-2 महीने बाद आएंगे क्लास में. ये आई नहीं आज. व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन एनीवन? जाइना फर्स्ट इक्वेशन आ गई. एन और आर के टर्म में फर्स्ट इक्वेशन. सर ये आ रही है 7r इज इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1. अरे तो आर को आर में ऐड करो ना. 7r n लेफ्ट. टू हाँ 8r माइनस 1. ठीक है ठीक है. अब सेकंड फाइंड करो. अरे तुम मारोगे क्या? इतनी गर्म सर्दी हो रही है. देखो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस रेशियो NCR माइनस 1 बाय NCR इक्वल टू 1/7. ठीक है. इसको ओपन करते हैं. NCR माइनस 1 क्या होगा? इट विल बी n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. कौन गिरा? चलो कोई नहीं. नया आएगा. सो व्हाट कैंसल्स? n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. ये रिवर्स हो जाएगा. r फैक्टोरियल n माइनस 1 मिनट n माइनस r फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर इज r माइनस 1 फैक्टोरियल n minus r plus 1 factorial equal to 1/7, right? Now, out of r factorial and r minus 1 factorial, which is greater? R. So r factorial से r minus 1 कट जाएगा. You'll be left with r. Similarly, out of n minus r factorial, n minus r plus 1, this is greater.
So n minus r plus 1. So 7r is equal to n minus r plus 1. That gives you first equation 8r is equal to n plus 1. बरोबर है? Now you find the second proportion, second ratio. And then you solve the two. क्या है? n find करो अब. The second one is NCR divided by NCR plus 1 equal to 7 by 42. NCR is n factorial, R factorial and minus R factorial. ये रिवर्स हो जाएगा n factorial, R plus 1 factorial, n minus R minus 1 factorial. Equal to 1 by 6. This cancels. This and this, R plus 1. This is greater, n minus R. So 6R plus 6 is equal to n minus R. 7R is equal to n minus 6. Right. ये आ रहा है. So now solve these two. R कितना आ रहा है? 7. That's the answer. करने से पहले ही हो गया. बढ़िया आने हैं. अर्शिया हो गया. यस सर। प्री बोर्ड का मैं तुम्हारे अभी तुम्हारा एग्जाम ये भी खत्म हो रहा है. जैसे अभी प्री बोर्ड 1 खत्म हुआ है तो 2 प्रॉली दिसंबर में होगा या नवंबर एंड। तो प्री बोर्ड में सारा सिलेबस आ गया. सारा सिलेबस। अच्छा, बहुत हिम्मत वाली हो तुम. यस सर। Right. Next. Now, sometimes they ask you find the term independent of x. That is, in a binomial expansion, there'll be one term which is without x. So let's answer a few questions on that. Hmm. Hmm. वो अच्छा, वो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है. वो एंट्रेंस में नहीं आएगा इतना. Find term independent of x. So one method would be that you basically expand the entire thing. That is, you find 10 terms, simplify each term, and then identify which term is without x. So entire 2 hours of math will be finished. The other method would be you first find the general term. Karo. Find general term of this. And then club the terms of x. And the power of that x should be equal to 0. Karo. So the method is find its general term, club the terms of x, equate the index of x to 0, and find r. R should be a whole number. R fraction में नहीं आएगा. Find general term, simplify, club the terms of x, power of x. हाँ, थर्ड वाले में. थर्ड वाला डिफरेंट क्वेश्चन है. पहले ये कर लो.
जनरल टर्म निकालो, वो टर्म फाइंड करनी जिसमें एक्स नहीं आ रहा है। असमी सोच रही है पिछली क्लास में आई थी तब तो इंटीग्रेशन चल रहा था 2 महीने पहले, आज ये क्या हो गया? अगली बार आएगी तो जेई वन खत्म हो चुका होगा। जनरल टर्म निकालो। सो इट इज 9 CR। नेक्स्ट इसके बाद शुरू होगा 12th का सिलेबस वापस से। या तो हम वो कर लेंगे वेक्टर 3D, वेरी स्कोरिंग इन जेई, और डिफरेंशियल इक्वेशन। So you find the general term, and now you club the indices of x. 9 CR, 3/2, leave it as it is. 9 minus r, x to the power 18 minus 2r. Then minus 1/3 to the power r, and 1 over x to the power r. Now you club the terms of x only, this and this. So 9 CR, 3/2 to the power 9 minus r, minus 1/3 to the power r, x to the power 18 minus 3r. So since it is independent of x, that means the power of x has to be equal to 0. So that gives you r equal to 6. And now substitute r back into the term. r को 6 वापस डाल दो. So 7th term is independent of x. You need to simplify this. r is 6. 3/2 to the power n minus 6. 9 minus 6. Minus 1/3 to the power 6. And of course, x to the power 0. Nine C6 would be 9 C3. 3 raised to power 3, 2 raised to power 3, 3 raised to power 6. 9 C3 is open 9 3 places by 3 factorial, which is 6. This would be 1 over 8 into 3 cube, which is 27. So the term is 7th term, which is 7/18. So 7th term is independent of x. क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि फाइंड द टर्म विच कंटेन्स x to the power minus 3. You might come across a question that find the term which contains x to the power minus 3. So whatever index of x is, same method. This time, index of x will equate with minus 3. Find r. R would be 7. And then same process. Find the term which contains x to the power minus 3. But r has to be always an integer, positive integer. Agar r fraction mein aa raha hai, that means the term is not existing. If r is fraction or negative, that term will not exist. Second part karo खुद से. Why?
सेकंड हो नहीं सकता ऐसा, क्वेश्चन तो दिया हुआ है 1/3 minus 1/5 to the power 8. TR plus 1 will be 8 CR x to the power 1/3/2 raised to power 8 minus R. X to the power minus 1/5 to the power R. 8 CR 1/2 raised to power 8 minus R. X to the power 8 minus R by 3. X to the power minus R by 5. So the power of x is 8 minus R by 3 minus x by 5 equals to 0. क्या आएगा? 40 minus 5x minus 3x is equal to 0. R, sorry. So R is coming out to be 5. बहुत जोर से आ रहा है R. R is 5. Substitute करो वापस R5. सिर्फ पावर को इक्वेट करना था क्लब करके. R को वापस 5 सब्स्टिट्यूट करो. कर लो मैडम. क्या बात है. एक क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिया था, तो समझ तुमने उसमें लिया था. R को 5 सब्स्टिट्यूट करो. 8C5 would be 8C3, right? 1/2 raised to power 3, and that will be x to power 0. 8C3 means open it 3 places. 8, 7, 6 by 3 factorial 6. 1/8. Answer is सत्ते पे सत्ता. 7 is the answer. ये आ रहा है. Now the third part of the question. करो थर्ड क्वेश्चन. हाँ लिखा हुआ है. If you notice, जो binomial part है ना, third का and first का is the same only. Oh. लिख दो कि 3 टर्म है वहां पे. वो मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है. हाँ. See, let's try to understand the concept, what's happening here. इसको तो हटा देते हैं. Let's try to understand the funda behind this. See, the first bracket is basically this. In the second bracket, you might get, how many terms will be there? 10. Yeah, though you expand, find the 10 terms, multiply those 10 terms with the 3 terms, you get 30 terms. उन 30 terms को solve करो और देखो किसमें x की पावर 0 आ रही है. एक मेथड तो वो है. वो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? We'll find out, we'll write general term of this, right? Which is 9CR 3x squared by 2 to the power 9 minus R minus 1/3x to the power R, right? And then multiply. So first term is 9CR, and you can also separate the terms. 3/2, 9 minus R minus 1/3 to the power R. And what is x की power? X की power is
18 माइनस 3r, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो दिस टर्म आई हैव सिंप्लीफाइड। नाउ दिस इंटू 1 प्लस दिस इंटू x, 9cr 3/2 9 minus r minus 1/3 to the power r, x की power 18 minus 3r into x. Then this into 2x cube, 9cr 3/2 to the power 9 minus r minus 1/3 r, x to the power 18 minus 3r into x, 2x cube. इतना एक बार लिख लो, उसको ओपन कर दिया। उसकी तो पावर 1 है ना, इट्स नॉट बाइनोमियल, उसको एक्सपेंड थोड़ी कर सकते हो। देखा ही नहीं कि पावर 1 है, लिखा हुआ नहीं ना। अभी कर दिया ना मैंने, जनरल टर्म लिख दिया इसका और इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। लिख लो एक बार इतना। अस्मी, और नेक्स्ट मंथ कहाँ घूमने जा रही हो? नहीं, अब एक्स की पावर क्लब करो हर टर्म में। ये तो एक्स की पावर यही है, इसमें एक्स की पावर ऐड हो जाएगी ना, 1 18 माइनस 4 आर, इसमें 3 18 माइनस 6 आर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप विल क्लब द इंडेक्स ऑफ एक्स। हाँ, इसमें तो यही आएगा। व्हाट अबाउट दिस? इट विल बिकम x to the power 19 minus 3r. What about this? X to the power 21 minus 3r. देखो जरा. So I get three terms where x is raised to power 18 minus 3r, 19 minus 3r, and 21 minus 3r. But we are looking for term independent of x. मतलब the power of x has to be equal to 0. So let them equate individually to 0. इसको 0 डालो तो इसमें r कितना आएगा? 6। r को 6 डाल देंगे इस वाले में, इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ रहा है? फ्रैक्शन हमें आ रहा है, फ्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ये तो वैसे ही हट जाएगा, ये हट गया। r कांट बी फ्रैक्शन। व्हाट अबाउट दिस? इसमें r7 डाल दो और सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। एक तो वापस वेट करें। देखो हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया और x की पावर क्लब कर दी। पहले टर्म में x की पावर 18 माइनस 3r, सेकेंड में 19 माइनस 3r, थर्ड में 21 माइनस 3r। सिंस वी आर फाइंडिंग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर कितना होना मांगता है? 0। तो x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, आई गेट 6। यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, 19/3 फ्रैक्शन में वो पॉसिबल नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, r7 आ गया। तो जो फ्रैक्शन आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, बाकी दो में r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पहला वाला डायरेक्ट लिख सकते हो, हमने सॉल्व किया हुआ था, ये 7/18 था ये। सेकेंड थर्ड वन यू कैन, r is 7, x की पावर 0 आएगा। 9c7 would be 9c2, 9c7 would be 9c2, कर लो। इसको 9c2 करके 9 into 2, 9 into 8/2 फैक्टोरियल कर देना।
नेगेटिव भी आएगा। किया किसी ने? सेवन बाई 18, 9c7 would be 9c2, 3 raised to power 2, 2 raised to power 2, minus 1 over 3 raised to power 7. 7 by 18 plus minus हो जाएगा, 9c2 would be 9 into 8 by 2 factorial, 3 raised to power 2 से कटेगा 3 raised to power 5, 1 by 4, 3 raised to power 5. So 4 to the 8, this is gone. 3 raised to power 5, this 3 square will be 3 raised to power 3. 7 by 18 minus 1 by 27. यही है? LCM would be 54. 2 by 27? अच्छा, this 2. So LCM would be 54. Hmm. 17 by 54. तू तो एसी चलवाना चाह रही थी। क्या? इनको मल्टीप्लाई भी करना है तुम्हें? जनरल टर्म लिख रही हो? You see the index are x and x square only. So you write the first three terms of each. एक काम करो, दोनों का first three terms लिख लो, उससे काम हो जाएगा. Because we are looking for x square and x. 1 plus x to the power n का expansion बताया था ना मैंने? nc naught, nc1x, nc2x square. Just write first three terms and do selective multiplication. खल्लास. Similarly, write 1 minus. So 1 plus x to the power m, 1 minus x to the power n. So this would be mc naught, mc1x
mc2 x square into nc1 minus nc1x plus nc2 x square. We are looking only for x and x square. अब सेलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन कर लो, किस में x आ रहा है. जब तुम इसको इससे करोगे तो x आएगा, इसको इससे करोगे x आएगा, बस उसका कोएफिशिएंट तुम्हें दे रखा है. Now what is selective multiplication? That you multiply only those terms which are required. We need the term which contains x, right? So you multiply this with this and this with this. You'll get the term containing x. This is called selective multiplication. And equate with 3. So mc naught into minus nc1 into x, nc1 into mc1 into x. mc naught is 1, nc1 is x, n, sorry. So x की कौन सी टर्म आ गई? mc naught nc1x mc1x nc naught. mc naught is 1, nc1 is n, mc1 is m, nc1 is this. So coefficient of x is m minus n. So m minus n is equal to 3. Equation number 1. This is called selective multiplication. Now you multiply those terms which will give you x square. अब देखो कौन कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आएगा. If you multiply mc naught with nc2 x square, you'll get x square. When you multiply this with this, and when you multiply this with this, there will be 3 terms containing x square. उनको मल्टीप्लाई करो. कोएफिशिएंट दे रखे हैं हमें. x का कोएफिशिएंट था 3 और x स्क्वायर का -6. 2 इक्वेशन, 2 अननोन सॉल्व कर लो फिर. x स्क्वायर होना है तो nc2 होगा वो. So this with this, mc naught nc2 x square, then minus mc1x nc1x, then nc naught mc2 x square. These 3 terms you get coefficient as x square का coefficient is -6. mc1 m होगा, ncn n हो जाएगा. नेगेटिव नहीं था, ये नेगेटिव होगा ना. nc1 नेगेटिव है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. nc1 n है, mc1 m है. mc2 होगा ओपन m2 प्लेसेस, m into m-1 by 2 factorial, m into m-1. एलसीएम ले लो, पूरा एलसीएम ले लो और ये इसमें डाल दो, n की वैल्यू m आ जाएगा.
Okay, Ryan, your answer is correct. एक्स स्क्वायर हटा दो एंड पूरी टर्म इक्वल टू -x है. MC naught is 1, NC2 is n into n minus 1 by 2. MC1 is m, NC1 is n. This is m into n minus 1 by 2 factorial, which is 2 only, and this is equal to -6. LCM ले लो. N square minus n minus 2 m into n. This is m square minus m equal to 6. So we get n minus m का whole square है ना? This is a perfect square equal to 12. N minus m is 3, so this would be 9. So n plus m is equal to -3. And m minus n is 3. Add these two equations. 2m is equal to minus. क्या गलती हो गई? m minus 3 है ना? हाँ. माइनस चेंज करें तो +2mn हो सकता है. अच्छा, दिस ना, राइट, 2mn. तो फिर मैंने तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया ना, n minus m का होल स्क्वायर. इस आपने साइन चेंज किया तो -mn + mn होना चाहिए. -2mn का साइन. n square minus 2mn plus m square is n minus m whole square, which is 3, so it will become 9. ये whole square है ना, won't make a difference. लास्ट में माइनस मिस कर दिया 6 का. अच्छा, ये -6 था, ओके. So this would be then 21. So when you add these two, 2m is -18. M is -9. Plus 21. So 24. So 2m is 24. That gives you m equal to 12. And m is 12, n is 9. This was basically MCQ, JEE का. ये बेसिक असाइनमेंट है 11th क्लास का. So with the new syllabus, these are the concepts only. Now we'll answer MCQs. In PYQs, you'll find questions having
negative index, fractional index, don't solve them because those are out of syllabus now. सर 3x की पावर क्या है 3x square. वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट भी हो गया इसका तो कल मिल जाएंगे मार्क्स. तुमने दिया वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट इसमें? कल मिलेगा. तुम्हारा नहीं हुआ अभी. जल्दी करो, डोंट वेस्ट टाइम. फाइंड द जनरल टर्म. So coefficient x bar 5, write the general term first. 5 CR 2x cubed to the power 5 minus r minus 1 by 3x squared to the power r. And then you can club the terms of x. Question to ye, you know. 5 CR 2 raised to power 5 minus r minus 1 by 3 to the power r x to the power 15 minus 3r x to the power 2r. So club the power of x. 15 minus 5r, and this should be equal to 5. We are looking for x to the power 5. So r is coming out to be 2. Substitute this r is equal to 2 back into the equation. Five C2 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2. 5 C2 बोले तो 10, 8 by 9. So binomial is, so next class we'll more questions on binomial MCQs. And then we'll start some new topic. Right, ending the class. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye. Thank you, sir.